कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड येस ऑफ कोर्स अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली कहीं जा रही हूँ। तो आज मैंने प्लान बनाया है जेमिसन डिस्टिलरी जाने का। सो जिन लोगों को नहीं पता है ये मैं बता दूँ कि जेमिसन इज़ वन ऑफ अ विस्की ब्रांड। तो अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन स्किप द वीडियो नाउ। एंड बाकी लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो लोग मेरा ये वीडियो देख के टाइम पास कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ कि जेमिसन इज़ वन ऑफ अ विस्की ब्रांड जो आयरलैंड में बनता है। आयरलैंड इज़ द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ जेमिसन और वो ग्लोबली उस चीज़ को सप्लाई भी करता है। एंड येस अभी मैं जहाँ जाने का प्लान कर रही हूँ वहाँ पे इट इज़ बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ जेमिसन। तो वहाँ पे इट्स सेड दैट एवरी ड्रॉप ऑफ जेमिसन इज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड देयर। सो जाके देखते हैं कैसे बनता है, क्या बनता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग जो मैंने कभी नहीं किया है। सो होपफुली इट्स गोना गो गुड। लेट्स गो। सो गाइज आई ऑलमोस्ट रीच द बस स्टॉप। ये है हमारा बस स्टॉप और आई डोंट नो अभी तो मैं शेड में हूँ तो आपको समझ नहीं रहा होगा बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और उसी के लिए सो वाटर बॉटल्स टू स्टे हाइड्रेटेड एंड या waiting for the bus. जैसे ही बस आएगा I will step in and go to Jameson Distillery. So guys this is the line for the bus और वो जो लास्ट बस है वो मेरी बस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, लगता है सबको आज ही जाना था। So guys अभी मैं बस से उतर चुकी हूँ and as you can see this is the Jameson Distillery Irish whiskey. This is the entrance of the Jameson experience. अभी पता नहीं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है to enter। ये रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है और यहाँ पे प्रॉब्ली दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट जेमिसन, कब से बनना स्टार्ट हुआ, कैसे बना, क्या बना हो तो अंदर समझेगा। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम। आई थिंक गाइस मुझे एंट्रेंस मिल गया है और दिस सीम्स टू बी द एंट्री ऑफ द डिस्टिलरी। और यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं चिल्ला सकती। जा चुके हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं मिडलटन डिस्टिलरी है। सो डेफिनेटली आई एम एट द करेक्ट प्लेस। ओह माय गॉड आई डोंट इवन नो द टर्म स्किन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं। आई डोंट इवन नो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सो यहाँ पे हमें टिकट्स मिलेंगे, हमारे फिजिकल टिकट्स एंड दिस इज़ द रिसेप्शन। अ गुड स्टार्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज़ अहेड। सो गाइस I've got my tickets and अभी हमारा टूर चालू होने को टाइम है। सो राइट नाउ आई एम इन द वेटिंग रूम जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकती हूँ व्हाट एग्जैक्टली जेमिसन इज़ एंड हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, जिसका इतना बड़ा डिस्टिलरी है। एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे एक फ्री टेस्टिंग सेशन भी है, ये उसी का कूपन है। मेरे तो कोई काम का नहीं है। इफ़ एनीबडी वांट्स इट प्लीज़ हैव इट फ्रॉम मी, द ट्रीट इज़ ऑन मी। Just look at this, so beautiful. Oh wow, these are so cute. Jameson glass. I don't know, ये इतना बड़ा है कि मेरे एक कैमरे के फ्रेम में सारा आ भी नहीं पा रहा है, but I'll still try. Oh wow, cool packaging. The only best part about alcohols is the packaging. I love it. So I think ये whiskey glasses होते हैं और इसमें पिया जाता है। I think so. This is the bar. I think ये सारे जेमिसन के ब्रांड हैं, ब्रांड एज इन जो भी होता है। So just have a look at this and now हम सब यहाँ जमा हो गए हैं to start the tour. Looks cool. Let's start. I think we are here for a video demonstration. Let's see what happens here. Gents, the door we just came in and the door we're heading out the second are our emergency exits for today. If an alarm should sound at any time, just please stay calm, stay together, find someone in yellow, we'll help you out. In terms of photography, folks, 75 when we moved over the wall to our current distillery. So that video will just detail that period of time.
As I say, we moved over the wall in 1975, and a lot of the buildings that we're going to see today fell into disrepair. So firstly, just mind your footing in some of them, but also they're all going to be the originals. And we're going to go through the whiskey making journey, if you like, from grain to glass. The second half of the day, we're going to do a comparative whiskey tasting. We're going to be trying a Scotch whiskey today, a Jameson original Irish whiskey, and an American whiskey also as well. Just tasting the differences between these whiskies to know basically where we stand on. Showtime. Can you truly experience the vast and varied world of Irish whiskey in one breathtaking place? Here, where Irish whiskey came back from the brink and where it's been made ever since to this very day. We're delighted that you've joined us in our world-renowned distillery, home to many of the world's most loved Irish whiskies. Our epic story began almost 200 years ago. There were times when all seemed lost, but by bringing Jameson, Powers and Cork distilleries to this idyllic site here in Middleton, we still make our whiskey from just 3 raw ingredients. Water, cool and fresh from the pristine Dungorney River that runs right past our door. Without it, we wouldn't have a distillery here at all. Grains such as barley, sourced responsibly and exclusively from Irish farmers. It's all grown within 250 kilometres of Middleton, or as we say around these parts, just down the road. And distiller's yeast, which converts sugars from the grain into alcohol in preparation for the heart of the process, distillation whiskies. The first, single pot still, is the quintessential style of Irish whiskey, and Middleton Distillery has been its guardian for almost 2 centuries. Crafted from malted and unmalted barley, it remains our pride and our passion, and it's a critical part of almost every whiskey we make. Seasoned bourbon barrels. No wonder Jameson is the world's most loved Irish whiskey. Powers, named for humble innkeeper turned legendary distiller James Power, was born of one man's vision that became a shared passion handed down for generations. This robust and spicy Irish whiskey was and always will be the right call. Redbreast, a revelation from the first sip, is the most awarded single pot still Irish whiskey, and for good reason. It's exquisitely balanced, rich and fruity. The Spot range, wine cask-aged expressions with signature profiles as unique as fingerprints, represent a vibrant yet deliciously approachable and artistic interpretation of the Irish distilling tradition. Method and madness, an ambitious experiment in our micro-distillery built on a bold balance of tradition and innovation. These singular spirits are daring and delightful in equal parts. And finally, Middleton Very Rare, the pinnacle of Irish whiskey that proudly bears our name, crafted by our unbroken line of dedicated distillers, drawn from the finest and rarest casks. These annual vintage releases are complex and nuanced modern-day masterpieces. Now, it's time for you to explore where it's all made. Enjoy discovering our home, past, present and future. Wasn't the video beautiful? Although मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करेगा, but जिन लोगों मतलब जो लोग whiskey पीते हैं उनके लिए they will be aware of very minute details of the whiskey they are having. So it was a beautiful video. Together to form their strategic alliance I suppose in correlation to the demand for Irish whiskey around the world. Of grain split into 100 kilo, 16 stone or 225 pound sacks, burlap sacks. The men in here operating would have to carry these sacks on their back up and down 4 floors before we added our pulley system or elevator that you can see there. So basically ये internal areas है जहाँ पे whiskey बनती है. These are the complex machineries जिसके help से whiskey बनती है. These are very huge to produce huge amounts of Jameson whiskey in this distillery. Look at the machines working. Sorry. These are huge wheels that helps in distillation process of the whiskey. Let's see, where are we going next? What's happening here is that the enzymes are basically doing their eating. They're doing their main job. They're breaking down sugars and starch into simpler sugars that will actually mix in with the water itself, giving us a sugary liquid called wort, W-O-R-T. This sugary liquid will then flow down through a sieve-like flooring in the bottom of the mash tun into these bad boys up here. These are called wash bags. They are 45,000 gallon or 207,000 litre fermentation vessels made of pine wood. अभी मैं apparently distillation process के लिए
like just to look at the distillation. अभी हम वहाँ जा रहे हैं. And these are basically the storage boxes for the Irish whiskey. हमें ऊपर रूम में भेजा गया है. Let's see वहाँ पे क्या. Oh my God. I don't know ये क्या है, पर ये जो भी है बहुत ही ज़्यादा giant है. God. इसे खोल दो. खोल दो. वाओ, कितना ज़्यादा बड़ा है. I think यहाँ पे डिस्टिलेशन का प्रोसेस दिखाया जाएगा. Probably this is what they're gonna explain. Let's see. Basically, with the heating of copper, we're going to get three main flavours: cinnamon, nutmeg, and clove. So, if you've ever seen chefs cooking with copper pots before, possibly in restaurants, this is why. This is the flavours that we get from the actual heating of copper itself. One of the reasons that it's used. So guys, this whole thing is made up of copper, and the main reason that I understood is because इसमें nutmeg, clove और cinnamon का flavor आता है, and that is the reason to distill the whiskey in copper vessel. Let's go ahead. और वो हमें कहाँ ले जाते हैं? Let's see. Also guys, मुझे अभी एक और चीज़ पता चली है. वो ये है कि जेमिसन का मेजर मार्केट इज़ इन इंडिया. सो इंडियंस, आप लोग जो जेमिसन पीते हो उसका एक एक डिटेल देख लो यहाँ पे. दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू ऑल. These are the barrels जिसमें विस्की को स्टोर किया जाता है. Even if you have a look at the cards there, वहाँ पे भी barrels लोड करके रखे गए हैं. So there are plenty of barrels here. So this is the cafe area जहाँ पे probably आपके टूर ख़त्म होने के बाद आपको विस्की टेस्ट करने मिलता है. Of course मैं तो पीती नहीं हूँ, so I will have some kind of non-alcoholic beverage. But let's see, we are going next to the maturation house. वहाँ पे क्या पता चलता है. Let's see ahead. So this is the maturation center जहाँ पे whiskey mature होती है, and probably this is the final step in the whiskey distillation process. Beautiful. कोई तो खुफिया रास्ता और हम कहीं जा. To make Irish whiskey, we need spirit and a barrel. So far, we have the spirit, we need a barrel to put it in. All of our barrels come from two variants of the white oak tree. The first of those variants is the Quercus alba, coming from the Ozark Valley in Missouri in the United States. The second is Quercus ober, coming from Galicia in Spain. Trees cut down into logs and then into staves, the linings of barrels. So I don't know if you saw the 4 pillars as we came in the door. This is how staves are actually stored for up to 2 years to take out any unnecessary moisture within the wood, because we want as much soakage as we can in this wood, as I'll explain in a second. We are here to get the smell of the almost finished whiskey. Oh my God. Where we are now, as I said, is the maturation warehouse full of over 1,000 barrels of Irish whiskey currently maturing, and as you probably saw coming in the door. Still too young to be an Irish whiskey though, because we are still under that 3-year rule under government regulation. So our second barrel, barrel 2, is now legally an Irish whiskey. We see a deep caramelization of colour, but also tastes are going to start to change here as well. Still too young to be a Jameson whiskey, because we do not supply anything under 6 to 7 years old. So by barrel 3, we now have a standard legally Irish Jameson whiskey. Deep caramelization of colour again, because of that soakage into the wood and dragging back out chemicals such as lignin, which is a colour chemical. You can see why now prices will start to creep up. This is more amplified again by the time we get to 18 years old, through the signs of these tastes and colours. This is basically ruby red at this point. We've lost, at 18 years old, 36% of the barrel. So the video that you saw before was basically, अगर मैं एक जिस्ट में बताऊँ तो वो ये था कि यहाँ पे ऐसा एक है कि
जब आपका विस्की बनता है तो यू कैन नॉट इमीडिएटली मार्केट इट बिकॉज आपको उसको मिनिमम ऑफ 3 years रखना पड़ता है बिफोर प्रोसीडिंग अहेड. बट यहाँ पे वो लोग एटलीस्ट 6 to 7 years तक रखते हैं एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग इट. एंड वहाँ पे जो डिफरेंट बैरल्स थे इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट ईयर्स. कौन से साल में कैसा टेस्ट आता है, कैसा स्मेल आता है, क्या कलर होता है. सो दोज बैरल्स रिप्रेजेंटेड the Jameson whiskey at different stages of their life cycle. So yeah, it was very cool. So we have headed for the tasting session और ये ऐसे अलग अलग divisions है जहाँ पे एक बैच को टेस्ट कराया जा रहा है. I don't know मैं क्या करने वाली हूँ. Let's see. Which direction do we see? There's 2 over this side. Sorry. Okay. As I said, double distilled and comes from that interaction from peat, smoke, and barley. So taking this onto the nose, it's going to be very, very peaty, earthy, or for the lack of a better term, spicy. Kind of tingles the bridge of your nose a small bit. It's still very aromatic. Banana or caramel. Want to take a taste of that then, folks? Again, quite light, quite perfect. So अभी सब के सब जो भी हमारे बैच में थे वो यहाँ टेस्टिंग सेशन के लिए आ गए हैं and they are ordering one whatever they feel like because this coupon gives you the access to 1 glass or pint or I don't know what it said of whiskey. Perfect. So if you just put the small end of your ticket in there, that would just be amazing. Okay, guys, enjoy. Okay. One more thing to note is यहाँ पे मुझे पता चला कि Jameson also has one of the whiskey which is named as very rare और वो साल में एक ही बार बनता है और वो it is the only place जहाँ पे वो whiskey बनती है और ये globally distribute होती है. तो इसका कुछ 127,000 liters of whiskey ये बनती है और within 10 minutes इनका वो सारा का सारा stock is लुक एट द क्रेज़. यहाँ पे अभी इन्होंने कहा था कि लोग यहाँ पे आते हैं अलग अलग टी शर्ट्स कपड़े बदल के आते हैं वापस वही चीज़ लेते हैं बट दे मेक श्योर कि ये एक इंसान को ज़्यादा बॉटल ना दे. सो पर पर्सन रेस्ट्रिक्शन इज़ ओनली 2 bottles. So yeah, it's insane. So guys, here I am done with my Jameson Distillery tour. जो भी टेस्टिंग का सेशन था उसमें I just had ginger and lemonade और या मेरी तो टिकट वेस्ट हो गई बट या इट वाज लाइक अगर आप यहाँ आए हो तो आपको वो आज ही लेना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ दैट कूपन नाउ. सो मैंने एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेके पी लिया एंड yes, I am done with this Jameson Distillery tour and it was something new for me. I enjoyed it. Let me know, did you guys enjoy it as well? And I'll see you in the next vlog hopefully. Bye bye.